Okay, let us start students. कुछ माइक का इश्यू था तो थोड़ा सा डिले हो गया. So let us start with tutorial 3 as we are studying unit 3. So let us discuss some questions of tutorial sheet 3. Then we'll take a brief solution of these questions. So this unit is based on 16-bit microprocessor, that is Intel 8086 microprocessor, and in this tutorial sheet I included total 14 questions in subjective questions, and there are total 4 topic sets in this tutorial. And the first topic, that is architecture of 8086 microprocessor, is the most important topic and is having more number of questions compared to other topics, because जो main topics हैं वो इसी में mostly included हैं, and ये जो topic है ये सबसे बड़ा topic है यूनिट का. So as you see, as in the previous tute sheet, I included architecture and pin diagram of 8085, and the same question you will get in this tutorial sheet also, because the unit is likely to be same as 8085 second unit, and we are studying 8086 microprocessor. So the start of this of this unit is containing the internal architecture of 8086 and its pin diagram. So that is why I included both questions related to internal architecture and related to pin diagram. So you need to draw the internal architecture of 8086, and also you have to discuss the important blocks of this architecture. And as discussed in the lecture, you know that the architecture of 8086 microprocessor is divided in two parts. कौन-कौन से दोनों parts हैं? Bus interface unit, BIU in short, and execution unit, ये जिसको कि हम EU in short बोलते हैं. So what is the function of these two parts of architecture? You know that, and which blocks or which are the main blocks of these parts of microprocessor are, you also know that. The third question is based on register organization of Intel 8086. रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने जब आर्किटेक्चर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या है, कौन कौन से रजिस्टर्स 8086 में हैं और हमने किस तरह से उसको बाइफरकेट किया हुआ है. देन फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ 8086 माइक्रोप्रोसेसर, and this is the most important part of this unit, because अगर एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से या जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो आर्किटेक्चर्स, पिन डायग्राम्स या रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया या स्टेटस फ्लैग्स हो गए, ये सारी चीजें 8085 में भी हैं, एंड these topics are important in 8085, but
When talking about 8086 microprocessor, the different thing we found in 8086 is operating modes as compared to 8085. And this is the important functioning of 8086. That is why this topic is the most important topic of this unit. And you need to know about this topic. So what are the operating modes of 8086? Minimum mode and maximum mode. So you have to डिस्क्राइब कि कौन-कौन से ऑपरेटिंग मोड्स हैं। तो 2 ही ऑपरेटिंग मोड्स हैं और दोनों के नेम्स मेंशन करने हैं एंड डिस्कस देम इन ब्रीफ। तो यू नीड टू स्पेसिफाई कि when 8086 works in minimum mode and when 8086 works in maximum mode. Means what connections we have to made to work 8086 to use 8086 as a in minimum mode or maximum mode. And while discussing these operating modes, you also need to specify ki which pins are associated with minimum or maximum mode. So we already discussed ki pin number 24 to pin number 24 to 31 are associated with this operating modes. And you need to specify ki, how these pins works in minimum mode and maximum mode only in this question. So that will be the brief of operating modes for this. नेक्स्ट फिर जैसे स्टेटस फ्लैग्स की बात करते हैं इन 8086 So we discussed कि there are total 9 status flags in 8086. Out of these 9, 5 flags are already studied in 8085 and they are as it is used in 8086. And 4 new flags are there in 8086 microprocessor that we have to study extra in this unit, and we already discussed about them. And you have to discuss the role of each flag. So whenever you are asked for status flags in either 8085 or 8086, you need to draw the bit pattern of the flags also. It is an important part of status flag. So here you need to draw the 16-bit pattern and you have to show which pins are not being used as status flags, which bit numbers are not being used as status flags, and how many status flags are in 8086 and their positions in the status register. So you need to learn that positions of flags. Then फिर question number 6 is comparison of Intel 8086 and 8088. And यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है, that is a comparison between 8086 and 8085 also, because we are studying 8085 and 8086, so you are able to differentiate these two microprocessors. And when I started this unit, in the starting
some major points are already discussed based on the comparison of 8085 and 8086. तो वो तो आपको पढ़ना ही है कि 8085 और 8086 में क्या डिफरेंस है, बट 8086 जब भी स्टडी किया जाता है तो एक कंपैरिजन 8086 का 808 से भी स्टडी कर लिया जाता है, ऑल्दो 8088 इज नॉट इन सिलेबस, बट आप लोग 3-4 डिफरेंसेस एटलीस्ट जरूर इसमें भी पढ़ लीजिएगा। देन फिर यूनिट का जैसे डिवीजन किया गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोरी एड्रेसिंग एंड मेमोरी सेगमेंटेशन। So memory segmentation is also an important topic, but we already studied it in 8085 also. In memory segmentation, we divide the whole memory into some segments, जिसमें से हम लोगों ने 4 सेगमेंट्स हम लोगों ने स्टडी किए हैं। 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट। You have to mention that in question number 7. Then instruction pointer and stack pointer का function क्या है? Instruction pointer acts as like जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम काउंटर 8085 में स्टडी किया था, बिल्कुल सेम फंक्शन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का 8086 में। एंड स्टैक पॉइंटर तो हम लोगों ने वहां पर भी स्टडी किया है, सेम फंक्शन यहाँ पर भी है स्टैक पॉइंटर। देन फिर अगर एड्रेसिंग मोड्स की बात करते हैं इन 8086, so some addressing modes are same and some addressing modes are different in 8086. So this topic will be studied in the next lecture, and that will be, I think, on Tuesday. So we'll study this topic on Tuesday, and in that topic we also study what is respective address and what is offset address, because you know we are having 20 address lines in 8086, but the storage we have in 8086 is of only 16-bit, and addresses are also stored in the registers of 8086 microprocessor. So all the registers in 8086 microprocessor are of 16-bit, so we always store only 16-bit data. Then how we get the 20-bit address line? So that can be cleared by studying this effective address and offset. Then you will understand that how a 20-bit address is being made. Then फिर तो beyond this question number 8 तक का तो हम लोग स्टडी कर चुके हैं, and beyond this question we need to study in next lecture. But there are 2 more questions which we already discussed, are question number 11 and 12, in which you need to draw and discuss the typical minimum mode 8086 system and maximum mode 8086 system. So in the previous lecture, I discussed the configuration of minimum and maximum mode systems, in which I shown you the pin diagram of 8086, in which only those pins were present which are used in minimum mode or maximum mode, respectively. So that particular figure should be explained in these questions, question number 11 and 12. And these 2 questions are different from this question number 4, because question number 4 and 11, 12 are from the same topic, that is operating modes. But in this topic, you need to discuss the brief of operating modes, in which you have to write about the pins which are working in minimum or maximum mode. But in question number 11 and 12, you need to draw the whole configuration and explain the working, that which of the pins are being used and how these pins are being used.
रेस्ट फिर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस में भी इनको भी आप लोग कोशिश करिए अगर कर लीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन आर्किटेक्चर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड इट्स हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड इन 8086। तो पाइपलाइन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। वहाँ से यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज पाइपलाइन आर्किटेक्चर एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड इन 8086। तो डिटेल्स के लिए आपको बुक रेफर करनी पड़ेगी। एंड question number 2 is based on assembler directives of 8086 because here in unit 3 assembler directives are not mentioned in the unit, but if you study assembler directives of 8086 then you will be able to compare the directives of 8085 and 8086 microprocessor. So that is why I included assembler directives in supplementary questions, so uh, you can take these questions as an extended study. इंटरप्ट्स भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, डिस्कस द इंटरप्ट सिस्टम ऑफ इंटेल 8086 एंड व्हाट इज इंटरप्ट पॉइंटर। तो ये इंटरप्ट्स के बारे में भी आप लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने स्टडी कर लिया है कि ये इंटरप्ट सिस्टम इसका इंटेल 8086 का। अब यहाँ पर क्वेश्चन 8085 की तरह इसमें नहीं आएगा कि हाउ मेनी इंटरप्ट्स आर देयर इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर एंड एक्सप्लेन देम व्हाट इज द priority। उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं बनेंगे बिकॉज 8086 इज हैविंग अराउंड 256 इंटरप्ट्स। दैट इज व्हाई हम यहाँ पर इंडिविजुअली इंटरप्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ना उनको यहाँ पर इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो I included a diagram of interrupts of 8086 and you have to explain that diagram in this question number 13. And as you see, the second part of the question is what is interrupt pointer? तो interrupt pointer क्या है वो भी आप लोगों ने फिगर में देखा है, that interrupt pointer is being used to point the interrupts, and all the interrupt pointers are named as interrupt pointer type 0, type 1, type 2, type 3 and so on up to type 255. These pointers are used to point out the interrupts, and each and every pointer has been reserved for some purpose also, so that you need to include in this in the solution of this question. And this is the diagram of interrupt pointer table. So you see that the pointers are named as type 0, type 1, type 2 up to type 255, and each pointer is having 4 bytes of space, 2 bytes for CS, 2 bytes for IP, and what reservation has been followed is also mentioned here. And this is the configuration that I was talking in question number 11 and 12, that you have to draw this configuration
in question number 11 and जो next configuration है question number 12 के लिए, because this is used for minimum mode and the next one is being used for maximum mode. And इसका करेक्शन हमने आप लोगों को बताया था कि this is not connected to ground while we use it in minimum mode. As I already told you कि हम इसको जब minimum mode में connect करते हैं तो we connect this pin to VCC or plus 5 volt supply. So this is a misprinting in this PDF, so kindly correct it. And only those pins are mentioned in this diagram which are related to minimum mode configuration. And second one is the configuration of maximum mode. And in this maximum mode, most of the pins are showing the status of the 8086 microprocessor. And this is the pin diagram which should be included in the solution of question number 2 explanation. एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 की जो हम सॉल्यूशन की बात आप लोगों से कह रहे थे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है ऑपरेटिंग मोड्स में ये मतलब कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन क्वेश्चन. If you need to explain about the brief and you are not asked about the configuration, then do not go for the configuration, because configuration is a typical diagram, and if both modes are asked in a single question, then you cannot include both configurations in that question, because then the answer will be long enough. So that is why जो question number 4 है उसमें you need to only include the brief description of minimum and maximum mode, and you can include this topic for the solution of question number 4. But here also you need not to include all the theory given here. You need to only specify ki how many modes are there in this 8086 microprocessor and which are them, minimum mode and maximum mode. That's it. You need not to explain all the theory, because in the later part when you describe the minimum mode and maximum mode, you will explain ki this is the pin MNMX bar and it is connected to plus 5 volt DC supply when we need to we need to we need 8086 in minimum mode, and which pins are associated with this 24 to 31 and what are they. Then this is the architectural block diagram. Sometimes it is called block diagram, sometimes it is called architecture, sometimes architectural block diagram. So all are same. सिर्फ यही एक डायग्राम है 8086 के लिए अगर जनरलाइज वे में पूछा जाएगा. And as you see, this diagram is divided into two parts, VIU and EU, because this part is related with execution purpose and this part is related with the organization of bus.
देन फिर हम लोग जैसे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे एंड एक क्वेश्चन हमने रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पर भी बेस्ड इंक्लूड किया था। तो यू नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम in register organization in which you will found कि there are some general purpose registers, some pointer and index registers and some segment registers. And apart from these registers, there are two more registers which are instruction pointer and status register. And instruction pointer का तो हमने आपको बताया भी था कि instruction pointer बिल्कुल प्रोग्राम काउंटर की तरह वर्क करता है। स्टेटस रजिस्टर तो वही फ्लैग्स हमारे हो गए। देन फिर जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं ये भी हम लोग 8085 में स्टडी कर चुके हैं और जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी हम लोगों ने 8085 में स्टडी किया है, बट द डिफरेंस ओनली इज दैट कि यहाँ पर 16 बिट के रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर भी वहां पर हम लोगों ने स्टडी किया है। बाकी फिर यहाँ पर जो डिफरेंट रजिस्टर्स हैं वो बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स है। अदरवाइज बाकी सारे रजिस्टर्स वहां पर भी 8085 में भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं और 8086 में भी ये सारे रजिस्टर्स इंक्लूडेड हैं। एंड हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे व्हेनेवर यू आर आस्क्ड फॉर स्टेटस फ्लैग्स, आइदर 8085 की बात करिए और 8 सॉरी आइदर 8085 की बात करिए या 8086 की बात करिए, you need to draw this bit pattern or this register of used for status flag, and this status flag represent the bit positions of each and every status flag। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटस फ्लैग किस पोजीशन पर है एंड which bit positions are not being used in the particular microprocessor। This is the important part। Rest explanation तो आप लोगों को हम लोगों ने दिया ही है, हमने दिया ही है। एंड आप लोग नेम्स जो है इनके स्टेटस फ्लैग्स के उनसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्टेटस फ्लैग है और वो किस पे रिप्रेजेंट कर रहा है और कब वो सेट या रीसेट होगा। तो एज द नेम इंडिकेट इन दीज स्टेटस फ्लैग्स, their work is also associated with their name। जैसे कैरी फ्लैग है तो वो कैरी से रिलेटेड है, जीरो फ्लैग है तो वो जीरो रिजल्ट से एसोसिएटेड है, साइन फ्लैग साइन से है, पैरिटी का पैरिटी से है। तो इसी तरह से हर एक फ्लैग का जो नेम यहाँ पर रखा गया है वो नेम एज पर दियर वर्क है। तो इट इज नॉट दैट मच टफ कि आपको बहुत उसको रट्टा मारने या याद करने की जरूरत है। Just remember the name of flags and you will able to explain the working of flags, that when a flag is being set or when the flag is being reset।
And for attendance, I am taking a snapshot of participant list. Okay, I'm done. Now you can ask if you have any query, or you may leave the class. Okay, thank you, students. सर कैसे अटेंडेंस कैसे लेंगे सर? क्या सुन नहीं रहे थे क्या? सर सुन रहे थे, थोड़ा सा वही बीच में तो नहीं आई थी। स्नैपशॉट ले लिया है। ओके 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 सर।